Hello, dear friends. Advocate Ketki here. Today, I'm come up with one of the very interesting and very important subject that is criminal law. तो आज हम देखेंगे कि criminal law exactly इंडिया का क्या है. Okay, because see, law is a very important factor, undivided factor of our life. क्योंकि हम daily जो भी काम करते हैं, we must know कि if it is a crime or not, right? So let's see. Today's topic is criminal law, which is unit 12 of our legal awareness program. So we'll see in criminal law what our contents will be there. First, we'll see introduction of criminal law. Then we'll see history, crime and its elements, kinds of punishments, some important provisions that are mentioned in our criminal law, the general exceptions of IPC. Okay, this is actually today's main topic. What are the general exceptions? Okay, so we'll start with the introduction. So what mean by criminal law basically? So criminal law is a body, okay, which defines, ये क्या define करती है? Criminal offenses. अगर कोई offense है, तो when we can say that offense is a criminal offense. Okay, regulates the apprehension, charging and trial of suspected person. अगर कोई person जिसने क्राइम कमिट किया है या तो वो सस्पेक्टेड है, तो अंडर दिस लॉ विल सी द ट्रायल, चार्जिंग, मतलब वो पूरा प्रोसीडिंग होगा. एंड आफ्टर दैट वो गिल्टी है या नहीं है ये प्रूव होगा. अगर वो गिल्टी है, देन फिक्स द पेनाल्टीज एंड द मोड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एप्लीकेबल टू द कन्विक्टेड ऑफेंडर. अगर वो ऑफेंस उसने किया है, ही इज गिल्टी, दैट पर्सन इज गिल्टी, तो उसको फिक्स होगी कि क्या पनिशमेंट देनी है, क्या पेनाल्टीज देनी है, और अगर पनिशमेंट देनी है तो उसका मोड कैसे रहेगा. ओके, सो देयर आर एक्चुअली टू एक्ट्स, सीपीसी एंड सीआरपीसी. तो आईपीसी एंड सीआरपीसी. आईपीसी मीन्स इंडियन पेनल कोड एंड सीआरपीसी मीन्स द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. सो अंडर आईपीसी ऑल द क्राइम्स एंड उनकी पनिशमेंट मेंशन की गई है. एंड अंडर दिस सीआरपीसी ये प्रोसीजरल कोड है कि ये प्रोसीजर कैसी होगी, कि बेल कब ली जा सकती है, ट्रायल कब होगा, कैसे होगा, और ये सारी प्रोसीजर मेंशन है अंडर सीआरपीसी. सो विल सी इंडियन पेनल कोड. व्हाट मीन बाय पेनल? ओके, penal is used for prescribing the punishment of offenders under legal system. That's why ये code का name है Indian Penal Code, because in this code mainly this document is govern all the criminal acts. Okay, ये list है पूरी. In this act total 511 sections है. Okay, so the objective of this IPC is to provide general and exhaustive penal code for a crime in India. Okay, और CRPC क्या है? जैसे मैंने कहा, it is a machinery to function as far as the investigation and procedure, कि पुलिस क्या काम करेंगे, ट्रायल कैसे होगी, ये सारा प्रोसीजर CRPC में लिखा हुआ है. Now we'll see a quick history of our criminal law. Okay, so back in 1833 Indian Law Commission was formed. Okay, Indian Law Commission form हुआ by गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन. तो ये क्यों किया गया? लॉ कमीशन जो है ये क्यों फॉर्म किया गया? क्योंकि उसके पहले लॉज नहीं थे, कोडिफाइड लॉ नहीं थे. अलग अलग जो जगह थी इंडिया की, वहां पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन चलते थे. इंडिया में एक कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था. तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने लॉ कमीशन फॉर्म किया. तो उसका वर्क क्या था? टू एनालाइज द रूल्स एंड पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग कोड्स. जो भी कोड्स थे इंडिया में, उनके पावर्स क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, ये सब की स्टडी की. ओके, और एट द एंड उन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया. ओके, बाय द सजेशंस, which includes suggestions. So during the period 1834 to 1879, that committee worked hard and they form a remarkable piece of statute, means a very excellent statute
known as Indian Penal Code 1860. The first draft was submitted by Lord Macaulay in 1837 और वो पास हुआ in 1860. That's why हम Indian Penal Code 1860 ऐसा कहते हैं. Okay, और उन्होंने by the same committee they drafted another codification law, that is CRPC, in 1861. So now we'll see what is crime and what are its elements. तो exactly हम किससे क्राइम कहेंगे, किस एक्ट को हम क्राइम कहेंगे? तो इन सिंपल लैंग्वेज क्राइम इज नथिंग बट अनलॉफुल एक्ट. अगर ऐसा कोई भी एक्ट है जो कि अनलॉफुल है तो उस एक्ट को वी विल से एज अ क्राइम. सो क्राइम इज नथिंग बट एन एक्शन or omission which contributes an offense and it is punishable by law. ठीक है, any unlawful act is known as crime. तो अगर कोई भी पर्सन कोई एक्ट करता है, so how we can define whether it's a lawful, unlawful, whether it's a crime or not? So it is based on a principle, okay, a fundamental principle of the commission of wrongful act. ये principle क्या है? If there are two conditions, actus reus and mens rea, then that act will be called as crime. Actus reus means what? Actually the action. And mens rea means what? The intention. For example, यहाँ पे A person है who जिसने मतलब बीट किया है B person को. Okay, तो beating is the action. Okay, that is actus reus. But in his mind कि इसको मैं बहुत बुरी तरह से हर्ट करूंगा, that is mens rea. अगर ये दोनों भी present है, then that act is known as crime. Let's say, for example, आप रोड पे जा रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो और गलती से किसी को धक्का लग गया. ओके, तो आपका इंटेंशन तो रॉन्ग नहीं है कि मैं इसको धक्का देके गिरा दूंगा रोड पे. ठीक है, सो मेंस रिया इज एब्सेंट, एक्टस रिया इज देयर, आपका एक्शन हुई है, ओके, धक्का लगा है, बट आपका मेंस रिया नहीं था, तो दैट एक्ट विल नॉट कॉल्ड एज क्राइम. ठीक है, तो वो क्राइम नहीं होगा. सो दिस प्रिंसिपल हैज बीन एम्बॉडेड बाय द लीगल मैक्सिम. तो वो मैक्सिम क्या कहती है कि एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस माइंड इज ऑल्सो गिल्टी. ठीक है, बट हियर अगर ओनली रॉन्गफुल इंटेंशन है और एक्शन नहीं है तो वो क्राइम नहीं है, और ओनली एक्शन है बट नो एनी रॉन्गफुल इंटेंशन तो वो एक्ट भी, you can see here, then that act also cannot account as a crime. Okay, but when both are there, actus rea, criminal actus rea and criminal intention, mens rea is there, then that act is called as crime. Okay, now we'll see what are the different punishments are prescribed in our criminal law. So the first is death punishment. डेथ पनिशमेंट इज नोन एज द कैपिटल पनिशमेंट, और ये रेयर केसेस में ही अनाउंस की जाती है, जैसे कसाब को की गई थी कि जिसने मास किलिंग किया था. ओके, तो ऐसे जो रेयर केस है उसमें ही हम डेथ पनिशमेंट, डेथ पेनाल्टी देते हैं. नेक्स्ट पनिशमेंट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट. उस पर्सन को पूरी उसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट रहना पड़ेगा. ओके, रहना होगा, इज नोन एज लाइफ इम्प्रिजमेंट. सिंपल एंड रिगरस इम्प्रिजमेंट, उसको जेल होगी, और इसमें दो टाइप है, टू टाइप्स आते हैं, सिंपल एंड रिगरस. नेक्स्ट इज फाइन. इफ यू आर डूइंग सम क्राइम कि जो नो नीड फॉर इम्प्रिजमेंट, बस आप फाइन देके वो सॉल्व हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. फोरफीचर मीन्स व्हाट? द लॉस ऑफ समथिंग एज अ पेनाल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग. सो फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स आपकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, ऑक्शन की जाएगी और रिकवरी की जाएगी मनी की. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या का हो रहा है. ऑलराइट, सो दैट इज द फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. तो कितने पनिशमेंट्स है इन आवर क्रिमिनल लॉ? फर्स्ट इज डेथ, कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, देन इम्प्रिजमेंट, सिंपल और रिगरस, फाइन एंड फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. Now we'll see some important provisions of IPC. Now, my dear friends, IPC, I told you, it is a law with 511 sections. So it is literally impossible to
explain each and every section, each and every provision, but I'm trying to the my best कि मैं important provisions जो है वो explain करूँ आपको. Okay, now we'll see. First, abetting a crime is equally punishable. So what mean by abetting? Abatement means what? So abatement means what? Not doing any crime directly, means by yourself. A person is not committing a crime himself, but he is encouraging other, any third person, or requesting or induced to assist a third person is committing the wrong. Okay, that third person is committing that crime. All right, then the first person is guilty for the same crime is known as abatement. Abetting is a crime is equally punishment. अगर A person है, okay, let's say this person is A और इसने B को किसी का मर्डर करने के लिए कहा है और B ने मर्डर कर दिया, तो जो मर्डर की पनिशमेंट है वो तो B को मिलेगी, बट A को भी मिलेगी, जबकि A ने खुद ने तो मर्डर नहीं किया है, बट ही इज गिल्टी अंडर अबेटमेंट. Okay, for instance, I'll tell you one more example. If A instigates B to murder C and C refuses, C ने refuse किया कि मुझे नहीं करना ये काम, but still A is guilty of abetting B to commit a murder. ठीक है? And in second case, again, if A instigates B to murder D and D commit that act, he stabbed D, but क्या हुआ? D की death नहीं हुई and he recovered from his wound. But still A is guilty to instigating B to commit murder. Okay, so that is the abetting. Next is fraudulent use of false instrument for weighing. अगर weighing के false instrument use करते हो which is not absolute, just या फिर कुछ trick use कर रहे हो, so that is a crime. Or food malnutrition of food, it is also a crime. Okay, next is public nuisance. So first of all, you must need to know what is public nuisance. Okay, there is one more type, private nuisance, another is public nuisance. So when we can say a crime is a private nuisance, अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के राइट इन्फ्रिंज्ड होते हैं, so it is known as private nuisance. But when publicly right infringed होते हैं, we call it as a public nuisance. Okay, in private nuisance injury caused to an individual, but in public nuisance injury is caused to the person of a public. All right, okay, so next is murder. Again, murder when unlawful killing of any person is known as murder. यहाँ पे भी बहुत सारे फैक्टर है कि मर्डर हुआ है या कल्पेबल होमिसाइड है, उसके क्या क्या ग्राउंड्स है या किस सिचुएशन में हुआ है, ये सारा स्टडी करना है. नेक्स्ट इज कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस. नाउ अगर आपकी ड्यूटी है टू बी अलर्ट. अगर आप नेग्लिजेंस करते हो, आपकी ड्यूटी किया तो कोई रैश एक्ट करते हो जिसके वजह से डेथ होती है, तो वो मर्डर नहीं कहा जाता. इट इज नोन एज कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस. जैसे यहाँ पे ये रैश ड्राइव किया है, उसकी वजह से डेथ हुई है, so it is known as causing death by negligence. Next is dowry death. So you all of you know what mean by dowry. जैसे मैरिजेस में जो भी लड़की है उसकी तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाता है, या तो लड़के वालों की तरफ से डिमांड होती है, पैसे, गाड़ी एंड सो ऑन. तो अगर बिकॉज ऑफ डाउरी जो वो लड़की है उसका हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, अगर ये हरास करते हैं वुमेन को, उसको खाना पीना ही नहीं देते फॉर सेवरल डेज, और वो जो लड़की है, वो लेडी है, उसकी डेथ हो जाती है, सो दैट क्राइम, दैट डेथ फॉल्स अंडर डाउरी डेथ. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी लड़की के, वो लेडी के शादी के बाद विद इन 7 years उसकी डेथ हो जाती है, वो सस्पिशियस है, तो भी ये डाउरी डेथ जो है उसके इन्वेस्टिगेशन होती है. सो डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज. नेक्स्ट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन.
सोचो अगर आपको कहीं जाना है एंड दैट इज योर राइट, यू वांट टू गो समवेयर, और आपको रिस्ट्रेन करे कि नो यू कांट गो देयर, सो दैट इज अ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन टू स्टॉप एनीबॉडी moving towards wherever he wants to move and which is his right, so is known as wrongful restraint. Nobody can restrain you wrongfully. Next is assault. Any physical assault, any physical attack is known as assault. Any gesture also which leads to, like you are going to do physical attack, is also known as assault. Next is assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty. ये बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है. नेक्स्ट इज स्टॉकिंग. वी हैव सीन दिस इन साइबर क्राइम ऑल्सो. अगर स्टॉकिंग कोई कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो क्राइम. आईपीसी में इट्स अ क्रिमिनल एक्ट. ओके. नेक्स्ट इज थेफ्ट. what you can theft बहुत simple लगता है as per name, theft. Okay, but now we'll see the difference between theft and extortion. Okay, जो theft जो है, accused takes property without consent, चोरी से ले लिया without your consent, आपने consent नहीं दी है या आपने खुद से नहीं किया, उन्होंने जो भी accused है, he steal that property, is known as theft. But in extortion what happened? Accused takes the property by obtaining the consent wrongfully. Okay, अगर कोई पर्सन है, एक शॉपकीपर के पास जाता है, उसको लोडेड गन दिखाता है और कहता है गिव मी मनी. ओके, सो इट इज कंसेंट टेकन wrongfully. नेक्स्ट इज थेफ्ट इंक्लूड ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी. ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी का ही आप स्टील कर सकते हो, इज नोन एज थेफ्ट. But in extortion, it includes movable, immovable property, even a document, okay, can be included in extortion. In theft, no force is used, क्योंकि हम चोरी छुपे चोरी कर रहे हैं, right? किसी को पता नहीं चल रहा, आपको पता नहीं है, आपकी कंसेंट नहीं है, तब होती है, is known as theft. But in extortion, force is used. Okay. Next is cheating. Now it is very simple. Hey, cheating means what? Breaching any obligation. All right. जैसे यहाँ पे ये lady है, she is selling some this utensils, okay, to that man. What she is saying? All those utensils are very ancient, okay, and made up of gold. But जब इस जो ये आदमी है, इसने ये यूटेंसिल्स इस बात पे भरोसे पे खरीदे कि हाँ दे आर वेरी एंशिएंट एंड मेड अप ऑफ गोल्ड, बट लेटर ऑन ही कम टू नो दैट नो, इट्स अ फ्रॉड, सो इट इज नोन एज चीटिंग. नेक्स्ट सेक्शन इज हाउस ट्रेसपास. जब विदाउट योर कंसेंट, विदाउट योर नॉलेज, विद द क्रिमिनल इंटेंशन, अगर कोई आपके हाउस में ट्रेसपास करता है, इज नोन एज हाउस ट्रेसपास. बट व्हेन, अगर कोई पर्सन आपके गेट के बाहर खड़ा है, ओके, या तो आपके फेंस के बाहर खड़ा है, सो इट इज नॉट नोन एज हाउस ट्रेसपास. बट वो फेंस तोड़ के अंदर आ गया है या जंप करके अंदर आया है, सो इट इज नोन एज हाउस ट्रेसपास. सम मोर sections are there, like making a false document. It is also known as forgery. अगर आपने कभी किसी की सिग्नेचर की है, ओके, विदाउट देयर इंटेंशन, अगर अपने पापा की आपने सिग्नेचर की है विदाउट हिज इंटेंशन, इट इज फॉर्जरी. ये है मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट. या तो कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे आपने कुछ ऑल्टरेशन किया है, कुछ रब किया, कुछ ऐड किया है, या तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही फेक डॉक्यूमेंट बनाया है, सो इट इज नोन एज फॉर्जरी, फॉल्स अंडर दिस सेक्शन एंड इट इज अ सीरियस क्राइम. नेक्स्ट इज डिफर्मेशन. किसी का डिफर्मेशन करना इज ऑल्सो क्राइम. क्रिमिनल इंटिमेशन, then intentional insult with intent to provoke breach of peace. किसी का इस तरह से इंसल्ट करना कि उसको प्रोवोक आप कर रहे हो to breach of peace is also a crime. And next, word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman. Again, अगर आपके पास वर्ड्स है या आपका गेस्चर भी इस तरह से है, then also it is a crime. Next, very important topic, that is the general exceptions of IPC. अब तक हमने देखा कि ऐसे एक्ट कौन कौन से है that fall under the definition of crime. But now we are going to see कि अगर आप
ऐसा कोई क्राइम करते भी हो, ओके, बट दैट इज नॉट इंटेंड एज अ क्राइम, वो एज अ क्राइम कंसिडर नहीं होगा। तो ये कौन कौन से एक्ट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। Okay, sometime what happened, first I'll tell you the history. The criminal law covers various punishment, okay, which vary from case to case. जैसे हमने देखा अलग अलग punishment है, अलग अलग cases है, अलग अलग crime mentioned है, तो punishment भी differ होगी as per the case. But it is not always necessary that a person gets punished for a crime which he has committed. ऐसे नहीं होता हर बार कि उसको पनिशमेंट मिलती ही है, तो क्यों? बिकॉज दे आर इन जनरल एक्सेप्शंस. सो व्हाट हैपेंड, इंडियन पेनल कोड इन 1860 recognized defenses in chapter 4. They are known as general exceptions. So it is included in between section 76 to 106. Okay, all right. So we'll see what are those general exceptions. Act of judge, accident, necessity, infancy, insanity, intoxication, consent, trifling, and private defense. All are the general exceptions. So we'll discuss one by one. You will come to know. First is mistake by fact. Now my dear friends, mistake of law is not an excuse. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, किसी रोड पे आप ड्राइव कर रहे हो एंड द स्पीड लिमिट इज 80 किलोमीटर पर आवर और आप ड्राइव कर रहे हो 100 की स्पीड से, अगर आपको फाइन होती है, देन यू कैन नॉट गिव डिफेंस दैट आई वाज नॉट नोइंग अबाउट दैट लॉ और दैट प्रोविजन. ओके, सो absence of law. Okay, so mistake of law is not an excuse. But mistake of fact अगर है, then you can take defense of general exceptions. So what mean by mistake of fact? I'll tell you now. If any person is bound by law, ठीक है, and he is doing his job in a good faith, then mistake of fact you can consider. जैसे एक पुलिस ऑफिसर है और उसको पकड़ना था बी को कि जिसने मर्डर किया है, एंड ही अरेस्टेड दिस पर्सन बट ही इज नॉट अ बी, ठीक है, बट पुलिस ऑफिसर का ये गुड फेथ था, गुड इंटेंशन था कि उसको ऐसा मतलब प्रिटेंड किया उसने कि यही है वो पर्सन जिसने मर्डर कमिट किया है, तो इन दैट केस पुलिस ऑफिसर इज नॉट गिल्टी. ओके, बिकॉज इट्स अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. नेक्स्ट इज जुडिशियल एक्ट. Okay, and one more example I wanted to give you for mistake of fact. If a soldier firing on a mob, okay, soldier hai and he is firing on a mob by the order of his officer, in that also he is not liable for any crime because he is bound by law and he is doing his duty. Okay, next is judicial act. Now act done by a judge when acting judiciary, when he is acting judiciary, it is not falls under any crime, it is not known as, or he is not liable for any crime. For example, giving capital punishment to Ajmal Kasab was done under the judicial powers of judges, right? That's why that act comes under general exceptions. Next is accident. Okay, accident committed when doing a wrongful act, when doing a lawful act. अगर कोई lawful act आप कर रहे हो और तब कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट मीन्स व्हाट, सडन कोई भी सिचुएशन अराइज होती है, then that act will fall under general exceptions. Without any criminal intention or knowledge in the doing of lawful act, आप कोई lawful act कर रहे हैं और आपका बिल्कुल भी criminal intention नहीं है, okay, then you are not liable for crime that happened. For example, person is working with hatchet, means what, अगर कुल्हाड़ी से कोई person काम कर रहा है और उसका head अगर निकल के किसी दूसरे person को लग जाता है, तो वो crime नहीं है, he is not liable for crime because he was not having any criminal intention and he was doing his lawful act. All right, next is necessity. Now act done is in necessity, means act likely to cause harm
act likely to cause harm but done without criminal intention, it is also not liable for a crime. Okay, because it is done under good faith. फॉर एग्जाम्पल, अगर रो हाउस है, बहुत सारे, जैसे 4-5 रो हाउस है और एक कॉर्नर पे एक एंड से फायर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो किसी ने बीच का जो हाउस है पूरा ब्रेक कर दिया, सो इट इज एक्चुअली क्रिमिनल एक्ट, बट इट इज फॉर नेसेसरी कि पूरे सारे हाउस है वो बर्न ना हो जाए, दैट्स व्हाई दैट पर्सन और दैट थिंग विल नॉट लायबल फॉर क्राइम, बिकॉज वहां पे टोटली मेंस एरिया वाज एब्सेंट. Next is infancy. Okay, so child below 7 year of age, अगर वो कोई भी क्राइम कमिट करता है तो वो क्राइम कंसिडर नहीं होगा, because they are not having any guilty mind. Okay, and any child between the age of 7 to 12 years, अगर उनसे कोई क्राइम होता है तो it is depend on the maturity of understanding of that person. For example, अगर एक 10 year का बच्चा है, ओके, और जिसने अपने नेबर से मोबाइल चुराया, he steal मोबाइल फ्रॉम his neighbor and sell to another person, तो इसकी तो मैच्योरिटी है. ओके, सो इट विल फॉल अंडर अ क्राइम. नेक्स्ट इज insanity or mental abnormality. So accused was of unsound mind when that crime is committed. ओके, जब वो क्राइम हुआ है उस टाइम पे अगर वो जो पर्सन है जो क्राइम कर रहा है वो एबनॉर्मल है, उसका माइंड, या तो वो अनसाउंड माइंड है, देन इट इज नॉट कॉल्ड एज अ क्राइम, बिकॉज ही वॉज नॉट कैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट. वो क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं. मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ. ए हु इज इनसेन और अनसाउंड किल्ड बी विथ अ नाइफ. ओके, ए ने मर्डर कर दिया बी का, बट ए क्या है, अनसाउंड माइंड है. सो थिंकिंग इट टू बी अ गेम है, उसको लगा इज जस्ट अ गेम, फन गेम है, और उसने मार दिया. बट ए इज नॉट लायबल फॉर मर्डर बिकॉज ए इज अनसाउंड माइंड पर्सन. नेक्स्ट जनरल एक्सेप्शन इज इंटॉक्सिकेशन. A person who was intoxicated involuntary. Involuntary means what? Without his own will, without his own wish. That is involuntary. The intoxication was administered either without his will or without his knowledge. अगर वो intoxicated कोई person है और उससे कुछ crime होता है, then he will not liable for punishment because वो intoxicated है without his knowledge. For example, A drank alcohol given by a friend, okay, and he was thinking that it's a cold drink. उसको बताया गया कि ये cold drink है और उसने वो पी लिया, but that was alcohol. Now A got intoxicated, he became intoxicated, and he hit the person on driving his car back to home. So he will not liable for punishment because alcohol was administered to him without his will and without his knowledge. ठीक है, विदाउट हिज विल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, एनी पर्सन विल ड्रंक, पी लेगा और कुछ भी क्राइम करेगा. सो इट्स नॉट दैट थिंग. ओके, जनरल एक्सेप्शन कब कहोगे आप, जब आप इंटॉक्सिकेटेड हो विदाउट योर नॉलेज एंड विदाउट योर विल, इनवॉलेंट्री एक्शन है. ओके, नेक्स्ट इज कंसेंट एंड ओके, कंसेंट. एवरी पर्सन इज द बेस्ट जज फॉर हिमसेल्फ and so will not consent to something which will hurt him. अगर हम खुद से किसी चीज के लिए कंसेंट देते हैं, ओके, तो वो क्राइम नहीं कहलाएगा. जैसे आप बंजिंग जंपिंग के लिए आप खुद से परमिशन दे रहे हो, ठीक है, तो अगर कुछ हो गया तो वो क्राइम नहीं है. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर बिफोर सर्जरी आपकी कंसेंट लेते हैं, राइट, अगर उसमें कुछ हो जाता है तो डॉक्टर लाइबल नहीं है बिकॉज ही इज डूइंग हिज वर्क इन गुड फेथ. Next is trifling act. So trifling act means what? Negligible wrong. बहुत सारे negligible wrong होते हैं. जैसे अगर पेन, जो पेन डिप करते हैं अगर हम another man's ink, that is also a crime. Okay. If we are taking sheet of paper from another's drawer, it is also crime. But ये negligible wrong है, उनके लिए हम punishment नहीं देते. Otherwise जीना मुश्किल हो जाएगा because ये छोटी छोटी चीजें हैं, right? Next is general exceptions
that is private defense, which is very, very important section. It is related to the right of private defense of a person and a property. You have a right to do private defense for protection of your own life or your property. Okay, so section given authority to a man to use necessary force against a wrongdoer for the purpose of protecting one's own body and property. Okay, it is known as private defense. It is also we can explain that another as also another's body and property when immediate aid from the state machinery is not readily available. देखो जैसे प्राइवेट डिफेंस ये तो एक्सप्लिसिटली है कि योर ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट इन फ्रंट ऑफ यू कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो कैन यू हेल्प दैट पर्सन अंडर प्राइवेट डिफेंस? तो यस, आप कर सकते हो. यू कैन नॉट वेट कि स्टेट आएगा, पुलिस आएगी और हेल्प करेगी. अगर उनको टाइम है आने के लिए तो आप हेल्प कर सकते हो अंडर प्राइवेट डिफेंस. सो सेल्फ हेल्प is the first rule of criminal law. Correct. So here I'll give you one example. Z, under the influence of madness, attempt to kill A. वो under the influence of madness, he attempted to kill A. Now Z is guilty for no offense because he is mad, unsound mind. But A has the same right of private defense which he would have if Z were the same. Right? अगर Z guilty नहीं है because unsound mind, so A को भी right है to do their private defense. Okay friends, तो ये सारे एक्ट है, ये सारे प्रोविजंस है गिवन बाय आर क्रिमिनल लॉ फॉर आर जनरल एक्सेप्शंस. ये सारे एक्ट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट में भी कुछ हार्म हो या ये एक्ट अनलॉफुल एक्ट हो, but they falls under general exception, and if they are falling under general exception you are not liable for punishment. So take care of that. Okay, कि कौन से एक्ट लाइबल है फॉर पनिशमेंट एंड कौन से नहीं है. सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो, देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. ओके, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन. आई होप दिस सेशन will be useful for you. All right, and thank you for giving me opportunity to share my knowledge. Thank you very much.